Jai Swaminarayan from BAPS Swaminarayan Vidya Mandir Gondal. Pandhi sir welcomes you in 12th standard English medium, chapter number 10, vectors, video lecture number 10. Now we have some questions regarding section formula, and these are some revision questions from 11th standard, and after that we will see some collinear vectors and points, those questions mainly in 10.2 remaining questions, along with some exemplar question, some good set questions, some CBSE and exemplar illustrations as well. So total main formula is section formula today, and after that some revision work is there, some questions, good questions actually, from our NCERT and from NCERT exemplar. Okay, so we will see all of them today. We start from first 7 questions which are based on section formula. Okay, look, section formula or division formula that you have learned already in 11th standard, in 10th standard, in all of them. Okay, look here, in section formula what will be there? Suppose we have 2 points, point P and point Q, and this one is origin. Now point P with position vector x, point Q with position vector y with respect to this origin, and suppose one point R is there on line PQ which divides this line segment PQ, in the ratio m:n from P's side, suppose. Then what are the position vectors of R? Position vector is nothing but coordinates. So what are the position vector? What is the position vector of R, dividing point, section point R, that we want to find? Again telling you, you have learned in 10th and 11th both this thing, and in 10th you have learned in coordinate geometry, in 11th in 2D line you have seen all these things. Same formula here, it is for 3D as well. What was the formula? You remember? mx2 plus nx1 upon m plus n. Yes, the same formula will be applied here. X2 means what? The second point, last point. Nx1 means first point. So same formula will be applied here as well. That is x2 means second point, terminating point, plus nx1, that is starting point, upon m plus n. This is for internal division. Okay, now if external division is there, then also we have the same formula. If ratio is m:n, then in positive we will take m:n, and in externally it will be taken negative. We have already learned in 10th and 11th standard all these things, which minus mn. So we'll put either here minus sign, or here it will be better to put here n negative. So it will be my vector plus minus nx vector upon m minus n, because it is external division. Look, in textbook they have given PQ, and this dividing point is outside the line segment. It lie on this line, but it is outside the line segment. Okay, then this position vector of this one is x, suppose here it is y. Then how we can find this position vector of R, dividing point R? It divides in the ratio m:n. Very simple, it is again m the second point minus n the first point, because of external division we are taking, that's why. So this is the formula here. Why I have taken x and y vectors in place of a and b? Because there are some questions in which they use a, b. Look here, a, b, all those questions use a, b as data. That's why I have changed this formula a little bit to x and y. They take in theory, look, position vector of p and q respectively, a and b. I have taken x and y, because a and b they are using in different meaning, in different sense, that's why they are using in data.
Okay, so some 10.2 questions, number 15, 16, we'll start from that. Look, position vector of P and Q given. Position vector of P and position vector of Q given. And ratio is given, m/n is 2:1. Then internal and external division we want to find, internally and externally. Point R divide, suppose R and R dash, then position vector we want to find. Same formula here we have. So for internal division, position vector of dividing point R is, look, my plus nx upon m plus n. So it will be mn, they are 2 and 1, 2 and 1 here. Here also 2 and 1. And here it is ending point, terminal point, and here it is starting point. Look, this is P and Q. Terminating here, it's terminating here. So it is -1, 1, 1. In the starting point we will put here 1, 2, -1. Now multiplication by a scalar. 1, 1, 1, so nothing. So -2 plus 1, -1. 2 plus 2, 4. 2 minus 1 is 1 upon 3. So upon 3 I am writing here, or you may write like -1 by 3, 4 by 3, 1 by 3, or you may write -I by 3 plus 4j by 3 plus k by 3. All of them are vectors, so denoting like this. So internal division, this is position vector of that. Now external division. Okay, so external division and position vector of dividing point R, again same formula, m the other point, terminating point, minus this time because of external, n first point, m minus n, and 2:1 here, again 2, 1, 2, 1, but along with minus sign. Here terminating point, that is -1, 1, 1, and here starting point 1, 2, -1. So it is -2, -1, -3, 2 minus 2, it is 0, 2 plus 1, 3, and in denominator you may see 2 minus 1 is 1, so no need to do anything. So it is -3i, no need to write j here, plus 3k caret. So position vector of dividing point R dash, external division. Okay, write down. Now look, midpoint, position vector of the midpoint of vector joining these 2 points is required. So midpoint means, look, question number 2 here, it is again 10.2, question number 16. Midpoint means ratio 1:1, 1:1. So here position vector of P is 2, 3, 4, and position vector of Q is 4, 1, -2, and midpoint divides line segment PQ in the ratio 1:1. So m/n is 1:1, 1:1. So if I write directly position vector of dividing point, then it is my plus n x upon m plus n. Look, it will be always internal division. Midpoint is always lie on, actually it is in mid, so always internal division, so positive only. So if I put 1:1, then 1, 1 no need to write here, and 1 plus 1 is 2. So simply you will get x plus y by 2, as simple as that. So position vector of midpoint, position vector of midpoint
Okay, sum of these two, 2 3 4 plus vector addition is commutative, that we know. 4 1 minus 2 by 2. ऐसे भी एडिशन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि सादा सिंपल एडिशन है अंदर एलिमेंट्स का, और एलिमेंट्स रियल नंबर है, रियल नंबर में कम्यूटेटिवनेस है, तो हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे. ओके, 2 प्लस 4, 3 प्लस 1, 4 माइनस 2, डिवाइडिंग बाई 2. दिस इज नाउ मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर. So it is 3 2 1 midpoint. Actually these are MCQs, buddy. You can do directly this plus this by 2, 6 by 2 3, 4 by 2 2, and 2 by 2 1. This is just for descriptive answer. In MCQ you can do orally. Okay, now question number 3, in that it is illustration number 11. So I think you can do from your textbook, NCERT textbook. Okay, so now we are moving to question number 4. Look, this is exemplars illustration, and it was asked in CBSE paper 13 and 16 both. We want to find position vector of R which divides PQ line segment in the ratio 1:2 internally and externally with position vector 2a plus b and a minus 2b. This is x, this is y. So internal and external again. So let us see what happens here. Question number 3, it is illustration of textbook. So question number 4 now. Look. Okay, OP is nothing but 2a plus b, and OQ is a minus 2b, and ratio m:n is 1:2. Now two questions, internally and externally. Internal division. Okay, तो internal division में क्या करेंगे, position vector of dividing point R is, what is that, m, second point. You may write directly here x and y, let. So here no need to write OQ, it is now y, plus nx upon m plus n internally, and for external division, position vector are m y, but this time it is minus nx upon m plus n. Okay, so now substituting this 1:2 here, 1 plus 2 upon 1 plus 2. Actually 11th standard we have discussed shortcut of this as well. Directly we can write directly, but right now in video lecture I will not reveal all the things. We will see some of the things in classroom. Okay, so a minus 2b, and here it is 2a plus b. So it is a 4a, so it is 5a, minus 2b plus 2b, so it is 0b by 3. So simply it is 5 by 3a, vector a. Same vector will write here. End point पहले लिखना है इस फॉर्मूला में. ये हमारा एंड पॉइंट, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट. This time it is minus, so it is a minus 4a, so minus 3a, minus 2b plus 2b, it is 0 upon 3, so it is minus of a, minus of a. Ready? Second point, a minus 2b, 2a plus b, a minus 2b, 2a plus b, it is plus b here, plus b, it's my mistake here. So it is minus 2b minus 2b, it is minus 4b, minus 4b, so it is minus 4 by 3b. So this is our answer. Internal division, position vector of that point R, and R dash suppose externally divides this line segment PQ, then position vector of R dash is this one.
So this is question number 4 here. Okay, question number 5 is again illustration, but this time it is exemplars illustration. Can you do that? 1:2 and these things are given. Starting ending, पहले ending लिखना है, यहाँ पे पहले ending लिखना है y में, फिर starting लिखना है, इसी तरीके से करना है. लेकिन कुछ बताया नहीं है तो इंटरनली ही समझना है, तो फिर सिर्फ यही वाला सेक्शन कर पाओगे ना आप. ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 आपके ऊपर छोड़ देते हैं. चलो एग्जाम्पलर में वैसे उसका मिल जाएगा सॉल्यूशन, गवर्नमेंट एग्जाम्पलर में. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. क्वेश्चन 6 क्या बता रहा है? सेम ही बात है, एग्जाम्पलर का है. देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स जॉइन ऑफ दिस 2 points in the ratio 3:1. Nothing is given, internal external, so we'll assume internal. Okay, so first point is x, that is 2a minus 3b. Second point is y, that is a plus b vector, and ratio m:n is 3:1. 3:1. So position vector of, you will write all these things, position vector of dividing point R is what? M, last point, terminating point, plus n, first point, initial point. M and they are 3:1. So 3, 1, 3, 1, and here last point we'll write first, a plus b it is, yes, and 2a minus 3b it is. So 3a, 2a, it is 5a. 3b minus 3b, 0 upon 4. So 5a by 4, 5a by 4 is D, option D. Okay, so you can do this question 6. Now question 7, I like this question. Why? Because they have asked midpoint, no, median, length of median. Yes, length of median. Look, it is also exemplars illustration number 17, but length of median is required. अब मिड पॉइंट में और मीडियन में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? ये मिड पॉइंट भले इतना लंबा लिखा, आप जानते हो, दिस प्लस दिस बाई 2, नथिंग एल्स, दिस इज द ओनली थिंग. ओके, 2 + 4 6 by 2 and blah blah, you can do that. Now midpoint is easy, median is easy as well, but in median we have to think a little bit differently. How? Let us see that. Look, in question number 7, what they have given here. In question number 7, 2 sides are given, AB and AC respectively. एक साइड दी हुई है हम लोगों ने AB और दूसरी AC. ये जो AB वेक्टर और AC वेक्टर, और रिक्वायर्ड है क्या? ये लेंथ रिक्वायर्ड है, इसका लेंथ रिक्वायर्ड है. ये समझ लो मिड पॉइंट हो गया, समझ लो मिड पॉइंट M, लेंथ इज रिक्वायर्ड. अगर यहाँ पे ओरिजिन होता तो आप क्या करते? B बार प्लस C बार बाई 2, पोजिशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, दिस प्लस दिस बाई 2 इफ इट इज ओरिजिन देयर. ओरिजिन नहीं है और कोई पॉइंट है, क्या फर्क पड़ता है? वही रहेगा ना, बात तो वही रहेगी. ये क्या है? AB, ये क्या है? AC, और ये AM जो मीडियन है, मीडियन AM is nothing but AB plus AC by 2. AB plus AC by 2. You will get median. देखो कई बुक में क्या एंगल बाइसेक्टर में भी यही यूज़ कर लेते हैं. नहीं, वो गलत है. वो कब यूज़ कर सकते हैं मालूम है? अगर ये आइसोसेलस है, 2 साइड्स, कम से कम 2 साइड इक्वल होनी चाहिए. तीनों इक्वल है तो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 2 तो इक्वल होनी ही चाहिए, तभी आपका एंगल बाइसेक्टर वही मीडियन हो सकता है. वही अल्टीट्यूड होगा, वही नहीं, अल्टीट्यूड तो नहीं बोल सकते, लेकिन एंगल बाइसेक्टर और मीडियन सेम होने के लिए ये दोनों साइड्स का इक्वल होना जरूरी है. चारों इक्वल हो जाएंगे, चारों. लेकिन कुछ पब्लिकेशंस में ये जी वाला क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पलर में भी है, एंगल बाइसेक्टर पूछा हुआ है, और कुछ बंदे क्या कर रहे हैं? ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बाई 2 कर रहे हैं. नहीं होता ऐसा नहीं होता एंगल बाइसेक्टर में. ये मीडियन का फॉर्मूला आप एंगल बाइसेक्टर में लगा रहे हो, वो कब लगेगा? अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तभी लगेगा. ये फॉर्मूला सिर्फ मीडियन का है. एंगल बाइसेक्टर भी अभी बताता हूँ वो कैसे करेंगे वो. चलो देखते हैं.
तो ये मीडियन की बात हो गई। यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, इन लोगों ने दे के रखा है जे के। ओके, ये है जे प्लस के गिवन इन द क्वेश्चन, एंड दिस वेक्टर इज गिवन लाइक 3i माइनस जे प्लस 4k, ऐसा दिया हुआ है। तो ये हो गया हाफ ऑफ एडिशन ऑफ दिस टू, एडिशन ऑफ दिस टू मीन्स 3i, जे तो कट हो गया भैया, और k 4k, सो इट इज 5k। और अगर इसका लेंथ इन लोगों ने पूछा है, लेंथ ऑफ मीडियन इज am is nothing but magnitude of this vector। मैग्नीट्यूड लगाना है तो स्केलर तो ऐसे ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो इस पे ही लगेगा, पूरे पे लग रहा है लेकिन वो स्केलर बाहर आ जाता है, मैग्नीट्यूड से बाहर आ जाता है। तो ये हो गया 3i प्लस 0j प्लस 5k। अगर इसका आप निकालते हो तो हो गया रूट ऑफ 9025 34, सो इट इज रूट 34/2 लेंथ ऑफ मीडियन। और अब हमारा क्वेश्चन वो आ रहा है, वो जो कुछ बुक में एंगल बाइसेक्टर में भी ये यूज़ कर रहे हैं बंदे, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो क्या करना है, आपको कुछ आइडिया आ रहा है? सोचिए क्या किया जा सकता है। ये जो है वो मीडियन के लिए है, कीप इन माइंड, याद रखिए इसे। मिड पॉइंट में भी वही किया था हमने, दिस प्लस दिस बाई 2। इस बार क्या किया, दिस प्लस दिस बाई 2, नथिंग एल्स। यू कैन डिराइव दिस इजीली यूजिंग ट्राइंगल लॉ, यस यू कैन। ओके, सो मीडियन के लिए याद रखिए। और एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर सपोज ए का जो एंगल बन रहा है दोनों इक्वल पार्ट करके अगर एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो वो कैसे करेंगे। एंगल बाइसेक्टर समझ लो ये ABC है, और यहाँ से जो एंगल है इसका ये बाइसेक्टर है, समझ लो। तो एंगल बाइसेक्टर पॉइंट समझो D है, तो D डिवाइड्स दिस BC इन द रेशियो AB is to AC। दिस AB I will denote by small c, this AC is small b। So angle bisector of A, एक्स्ट्रा डिस्कशन है, NCERT में तो नहीं है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A cuts opposite side at B, then D divides BC in the ratio C is to B। ऐसा क्यों हुआ, ये आप लोगों ने पढ़ के रखा है, सिमिलर ट्राइंगल्स, ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो इक्वल। ये दोनों ट्राइंगल जो है ना, ABD वाला और ACD वाला, ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो इससे क्या होगा कि ये C बाई B इक्वल्स दिस अपॉन दिस। सो रेशियो जो आप m/n सोच रहे हो ना, वो है C/B। तो ये साइड्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो, समझ लो यहाँ पे √2 हो गया, समझ लो यहाँ पे हो गए ये 3 4 16 9 25 26, यहाँ पे है ये 25 √2 है, और यहाँ पे है ये 26। सो √2 / √26 के रेशियो में आपको रेशियो वाला फॉर्मूला फिर से लगाना है, यही वाला जो रेशियो वाला हम फॉर्मूला लगाते रहे हैं वो लगाना है। देन यू कैन हैव योर D। टोटल 4 चीज़ें रहती हैं, मीडियन हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन वो 2 चीज़ें हम डॉट प्रोडक्ट के बाद में ही सीख पाएंगे, ये दोनों आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो कंप्लीट दिस क्वेश्चंस।